जय जगन्नाथ सांग माने एसजे यूट्यूब चैनल को तुम मान को स्वागत। सांग माने आज आम ओटीईटी एग्जाम रो पेपर 2 रो पेडागोजी क्वेश्चन को भल भाव में डिस्कसन करवा। चलतु डेरी न करी वीडियोटी को स्टार्ट करवा। वीडियोटी जदि भल लगे ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियोटी को लाइक करदे। हो देखंतु फास्ट कौन कही ना रोट लर्निंग रेफर्स टू। रोट लर्निंग टा क्या रेफर करुच्ची ना मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन बी। देन 2 रे कौन कही लर्निंग इज बेस्ट डिफाइन आज। लर्निंग टा कौ भाव में बेस्ट भाव में डिफाइन कर ना परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बी। थर्ड रे कौन कही अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू एलोन एंड व्हाट she or he can do with help of others is known as ZPD, zone of proximal development option B. Then कौन कही as per Bandura's social learning theory children learn through observation and imitation option C. Then a student with dyscalculia will primarily face difficulty in understanding mathematical concept and numbers option C. Then C रे कौन कही जो सॉरी 6 रे कौन कही व्हाट इज ए सेकेंडरी लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। ताहले ट्रायल आउ एरर थ्योरी जो थिला थंडाइकर तांकर सेकेंडरी लॉ कौन ना लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स ऑप्शन डी। देन 7 कौन कही करिकुलम्स रेफर्स टू प्लान लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। देन 8 रे कौन कही देखो व्हाट डज इनक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाय। इनक्लूसिव एजुकेशन टा कोटा इम्प्लाय करुची ना ऑल चिल्ड्रेन रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी और बैकग्राउंड learn together in the same class option B. Then 9 रे कौन कही for a creative learner a teacher should provide tasks that encourage divergent thinking option B. Then 10 रे कौन कही what of these is a cognitive factor of learning। कोटा गोटे cognitive factor ना prior knowledge पिलार prior knowledge टा गोटे cognitive factor। Then 11 कौन कही which of the following is a visual teaching learning aid। ए भितर कोटा गोटे visual teaching learning aid ना डायोरामा ऑप्शन सी। देन 12 कौन कही in a learner center approach the curriculum is primarily based on need interest and abilities of the child option D। देन 13 कौन कही लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। देन 14 कौन कही इफ ए टेस्ट मेजर्स दैट व्हाट इज क्लेम्स टू मेजर व्हाट क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज इट कॉल्ड देन वैलिडिटी। इफ ए टेस्ट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर व्हाट क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट इज इट कॉल्ड वैलिडिटी। Then 15 कौन कही a teacher wants to find the average score of a class that has few extreme high scoring students which measure of central tendency is most affected by these high scoring students ना एटा पिले हबो एटा हबो मीन ऑप्शन डी 15 रो। देन 16 कौन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट कहीं यूज करूँ ना प्रोवाइडिंग फीडबैक टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग ऑप्शन ए। देन 17 कौन कही हाउ ए रेटिंग स्केल इज डिफरेंट फ्रॉम चेकलिस्ट। रेटिंग स्केल किपर चेकलिस्ट डिफरेंट ना ए रेटिंग स्केल मेजर्स द डिग्री ऑफ ट्रेड व्हाइल चेकलिस्ट ओनली नोट्स its presence option B। then 18 कौन कही which principle of curriculum organization suggest that learning should move from known to unknown। यहाँ हूँ principle of teaching and learning option C।
Then a creative learner is a learner who generate new ideas. Option A. 20 कौन कही स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. ऑप्शन बी. देन 21 कौन कही अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी व्हिच इज डेवलप्ड ड्यूरिंग एडोलेसेंस फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग. 22 कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस. एटा हम फैमिली एटमॉस्फेयर. ए मु बेसी समय नष्ट करनी से जल्दी जल्दी कहीदे जमी कम समय आपण आंसर की को पाइपर. ए टीचर नोटिस ए स्टूडेंट एक्सेल इन लॉजिकल पजल बट स्ट्रगल विथ सोशल क्यू. द हाईलाइट विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इट इज एटा कौन हम ना एटा 4 हो. डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड इंटर इंडिविजुअल. 24 कौन कही व्हाट शुड बी डन बाय ए टीचर टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए क्लासरूम. कौन कर गोटे टीचर इंडिविजुअल डिफरेंस का ना बी हम यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट डाइवर्स नीड्स. देन 25 कौन कही which cognitive ability allows an upper primary student to understand that A greater than B and B greater than C implies A greater than C without seeing the object. एटा कौन हम ना A transitive inference. Then according to Noam Chomsky's theory of language development, which psychological construct helps language development of a child? LAD language acquisition device. Option C. Then 27 कौन कही which factor best represent heredity. heredity कोटा represent करछि ना genetic influence. Option B. Then adolescence is a period of great stress, strain, storm and strife. This famous statement is made by whom? ना जी स्टैनले हॉल करो. 29 कौन कही ना द डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड इज कॉल्ड आज एडोलेसेंस. 13 कौन कही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्किनर. हो सांग मैंने आज आम पेडागोजी 30टा क्वेश्चन देखीदेलु. तुम्हें मैंने मैच कर दियो तुम्हें केते ठीक करते भूल कर. जदि वीडियोटी आपन को भल लगे ताहेले वीडियोटी को लाइक करदेवे. रहिली. जय जगन्नाथ.